सो प्रेशर का फॉर्मूला मालूम है ना नीचे, एज वी गो डेप्थ इनसाइड द प्रेशर फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच इज अ फॉर्मूला, राइट। चलो, नाउ विल गो फॉर वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन ए वर्टिकली एक्सेलरेटेड फ्लूइड। नो क्या है वो, सेम वी कंटेनर में द लिक्विड इज हियर, वी आर मूविंग एक्सेलरेटेड, ऊपर लेके जा रहे हैं और निकल नीचे लेके जा रहे हैं। एट दैट टाइम प्रेशर क्या होगा, वी हैव टू नो प्रेशर क्या होगा। ओके, बिलो द प्रेशर में क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, क्या है देखेंगे। देखो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली एक्सेलरेटेड फ्लूइड, उसको स्टेटमेंट ज्यादा मत लिखो। व्हेन ए कंटेनर ऑफ ए फ्लूइड इज एक्सेलरेटेड वर्टिकली, द इफेक्टिव ग्रेविटी चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यू नो वी स्टडीड न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में, इन लिफ्ट में अगर व्हेन वी आर गोइंग अपवर्ड्स, वेट विल इंक्रीज और डिक्रीज, weight will increase or decrease, and as we go up from the lift, Decrease. no, up में Increase. increase होगा, down में decrease होगा। okay, by applying pseudo force we get G plus A, effective gravity is G plus A in upwards and effective gravity is downwards G minus A। okay, okay, so depending on the acceleration direction के हिसाब से the pressure varies with depth। देखो, we are seeing the thing upward acceleration। okay, so what will happen actually upward acceleration में, let the container, derivation कर रहे हैं but थोड़ा understand करो, ज्यादा नहीं आएगा। let the container accelerate upward with acceleration A। देखो, एक container में liquid है, इधर atmospheric pressure है, it is moving upwards now, it is accelerating। okay, now whether the dynamic, it is, we started dynamics means no, with respect to the fluid is at rest with respect to container। okay, the static fluids only, chapter ka naam static fluids only we are doing, not dynamics, right? But the the container is moving with some acceleration A। that time आपको क्या होगा, suppose मान लो you have one a small imaginary cylinder, मान लो there is a thing, इधर pressure P है, bottom में pressure is P। okay, I want to find total pressure Can you go P। back for a second? Hmm. So do I need to write all the No need, definition? just to understand we have to use the concept of effective gravity। Okay. effective gravity का use होगा concept। That's done that. okay, देखो, let फर्स्ट केस में वी आर टेकिंग द प्रेशर, फर्स्ट केस में क्या है आपको, इट इज मूविंग अपवर्ड्स वाला एक्सेलरेशन है। सो इसका व्हाट विल गो, डेफिनेटली प्रेशर विल चेंज होगा ना, एज वी गो बिलो इट विल चेंज। ओके, नाउ व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट, फर्स्ट विल कैलकुलेट द स्मॉल प्रेशर, small change in pressure we are calculating, if we integrate we'll get the total pressure from top to bottom। okay, so we are taking the small change in pressure। इफेक्टिव ग्रेविटी कौन सा कितना होगा, इफेक्टिव ग्रेविटी कितना होगा, G प्लस ए, जी माइनस ए, टेल में G प्लस ए होगा ना, वाई जी प्लस होगा, टेल में वाई जी प्लस होगा, So the force will be downward. फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इफेक्टिव ग्रेविटी इज G प्लस ए आएगा, राइट। समझ में आ रहा है, नीचे mg एक्ट होगा एंड द पर्सन, सपोज द पर्सन इज इन मूविंग फ्रेम, इज मूविंग फ्रेम, राइट, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ma लगेगा। सो व्हाट विल द टोटल फोर्स कितना है, mg प्लस ma, what is the total effective acceleration is how much, by m, right, f by m क्या, तो m कैंसिल हो जाएगा, g plus a आएगा, g plus a is the effective acceleration when we are going upwards। okay, now क्या होगा, a small देखो, consider a small fluid of dh element का, this is small dh element, I want to find the change in pressure कितना होगा, change in pressure कितना है, pressure difference कितना है, rho g effective into h, right, h is dh, g effective यूज करना पड़ेगा। okay, so g effective in this case में क्या है, g plus a into dh, right, we got a small change in pressure as we go depth में, we got a small change in pressure। आपको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे and we have to add this pressure also, ऊपर का pressure, so p is equal to, इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, टेल में इंटीग्रेशन ऑफ dp is p only and rho g plus a is constant, dh का integration is h only, so if we add we'll get p is equal to p naught plus rho into g plus a into h। this is the formula we have to use when the container is accelerating upwards, use the formula for p naught plus rho into g plus a into h। okay, and this is called as g effective। we are using normal formula only, देखो p is equal to p naught plus rho gh, right, rho g के जगह में g effective into h यूज कर रहा है, that's it, दोनों में वो यूज करने वाला है, सेम फॉर्मूला ओनली वी आर यूजिंग, बट g के जगह में g effective यूज करेंगे।
कैन यू गेस इसका क्या होगा व्हेन वी एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स? फॉर्मूला क्या होगा? P is equal to G P naught minus A. rho into G minus A into H, right? Copy that. Okay. So here one thing you have to remember: pressure increases faster than normal with depth because of container moves upwards. See, pressure increase हो रहा है as we go down. Pressure is increasing or decreasing? Tell me. Pressure is increasing, but comparison में pressure increases faster than normal with depth. Normally क्या है? P equal to normal क्या है? P equal to P naught plus rho GH, right? Now क्या है? P is equal to P naught plus rho times of G plus A in times of H. Now pressure is increasing, right? Comparison normal के साथ comparison से ये pressure increases. Pressure increase होगा compulsory, but faster than normal. बहुत faster होगा pressure. As we go depth में pressure increase होगा, but faster rate में increase होगा pressure. When we are accelerating. That is the conclusion, right? ये लिख लो. P equal to P naught plus rho into G plus A into H. Pressure increases faster than normal with depth because of container moving upwards. Which topic they are doing, Krishna? No? School में? Sir, sir, he started with force. Dynamics decided. Sir, I don't know if it's dynamics or Oh, not. Sir, okay, force acting on the container walls by the fluid. Okay. Statics one they are doing. ये वाला. Okay, covered. 1 second. Yeah. That's done. Okay. Now same way. Now downwards acceleration. Formula लिख लो. Downwards acceleration का formula क्या आएगा? P is equal to P naught plus rho into G minus A into H. This is the formula. As the container is accelerating downwards. Okay. Downwards में जा रहा है. That time effective gravity is G minus A आएगा. Same derivation किया तो indicate किया तो P naught plus rho into G minus A into H. देखो प्रेशर इसमें भी इंक्रीज हो रहा है. As we go downwards, pressure is increasing, but now it is increases slowly than normal. Okay. That's done. So therefore, what is the result we have to understand? That pressure increases slower than normal with depth. Pressure increases slower than normal with depth. पीछे करो. लिख दे कृष्णा. Yeah, sir, done. Yeah. So pressure increases slower than normal. So now on the video, why you are asking always? Why क्या कर रहा है? Okay. Now, chalo. Now we'll go for the pre-fall. Tell me, what will be the answer? If it is pre-fall, A equal to G. Just P naught. Yes. मतलब what is the conclusion from this? आपको G whenever equal to any container में पानी गिरने से free fall में pressure is same everywhere. Okay. देखो A equal to G में G effective will be 0. P equal to P naught only. That means pressure is same throughout the fluid. Is not मतलब as we go depth also the pressure will be same throughout the liquid. That means the fluid behaves like a weightlessness. Okay. Copied. Now vertically done. Now we have to go for the horizontal में. Horizontal में. Okay. So variation of pressure in a horizontal accelerating fluid. ये पूरा statics only. Because even though it is accelerating, it is called static. Why? Because the fluid is at rest with respect to container. Container के साथ rest है. The static fluids में we are dealing till now. Okay.
डायनेमिक्स में क्या है, with respect to container the water is actually flowing, that's called dynamics, but we are till now statics only we are dealing. Okay, now tell me क्या होगा pressure horizontal में, same or different? horizontal accelerating fluid में pressure will be 2 points में same or different? Different. it is different. Okay, so लिखो pressure variation due to horizontal accelerated fluid. suppose मान लो आपको एक पानी है, suppose you consider a imaginary cylinder here मान लो P1, here P2. Okay, it is accelerating like this, it is accelerating A. Okay, imaginary cylinder है. Okay, मतलब 2 points, L is the length of these 2 points का, L is the length of these 2 points. now इसका प्रेशर चाहिए, so इसका प्रेशर का फॉर्मूला है, लिखो which one will have more pressure, tell me which one will have more pressure, P2 or P1, which is having more pressure? P1, no, wait. No, wrong. Sir, P1. P1, P, no. more pressure, huh? No, why? They told So us. it'll be P2. हाँ, P2 will have more pressure. इसमें क्या होगा, फॉर्मूला देखो, P2 is equal to P1 plus L rho A. L rho A. This is the formula. So आपको एक पॉइंट समझ में आने का, द प्रेशर डिक्रीजेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो द प्रेशर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, लिखो. एंड ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, P2 is equal P1 plus L rho A. L is the length of the 2 points का length है. Okay, आया. So now you can able to identify, right, which one will have more pressure if I given some points also, by using in the direction of acceleration. Suppose if the accelerating is like this, which will have more pressure, tell me? P1. P1. So the pressure decreases in the direction of acceleration. So what's L? L is the length of the 2 points where we are calculating. It can be container का length हो सकता है, anything. Imagine cylinder ले 2 points. P2 and P1 are not in the same horizontal level. Horizontal line only, same horizontal line only. So, P2, if P1. P2 and P1 is done, then how do you calculate L? हाँ, मतलब वही वो आपको ज्योमेट्री पॉइंट लगा के करने के, मतलब उसका बॉटम में प्रेशर लगाने का, मतलब फॉर्मूला लगाना, डेप्थ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एंड इसमें तो हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ओके, विल सी दैट. चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, टेल मी थियोरेटिकल क्वेश्चन एंड टेल आंसर. इसमें Can you go back for a second? Yeah, wait. I should decrease in that. Just a second. Go to the next one. आया? Yes. चलो. The liquid inside the container density rho, the correct option is how much? Here points are given A, B, C, D. इसका length है L है, A, B length, height also length है L है. He's asking the difference between them is how much? देखो, it is accelerating like this with G. So find the relation between P and PP and PC and PD. Then you will get the something relationship, because A, C, B चाहिए, D चाहिए ना. So all points find करो. Sir, C is correct. So C is correct. Yes, correct. देखो PA is how much, tell me from this? PB PB plus L rho L PG. L rho A, right? ऐसा. Similarly PC find करके सबट्रैक्ट करो, you will get the answer. आया? चलो A B theoretical question करो. So that's also, wait 1 second. So The pressure maximum and minimum points are. that's either B and C or B and D. चेक One इन द, मतलब डेप्थ में क्या होगा, ऐसा कुछ करके बोलो. So B and C. B and C. Sir, B and D. हाँ, perfect. B and D is answer. So how is it D? You will tell. So P, A and D में which is maximum, tell me?
PA and PD. PA is See, maximum. PA. A is a maximum point, right? Okay. And matlab D is a minimum point. Okay. B and D में which is the maximum point? B. matlab D is the minimum point. C and D में which is the maximum pressure? Sir, why would A be the maximum point? B should be the maximum. नहीं A and D में when we are comparing. Oh, I'm A asking. and D. A and D में है. Okay. Okay. And C and D में if you compare, the pressure is more here, right? That means D is minimum सबसे. That's why D is a minimum point. आया समझ में? Yes. Next. So theoretical question understand करो. Okay. Now tell me, इसमें भी पूछेगा. I think topic done स्कूल में. आपको liquid है कंटेनर में. It is at same level. If you take this liquid and move with some acceleration, the liquid shape कैसा होगा? Liquid shape will become which shape? Tell me. एक vessel है, एक पानी है, अब फास्ट में जा रहा है with some acceleration. So vessel का shape कैसा होगा? Sir, it will go slant. हाँ, slant आएगा. वो slant का कितना angle है also we have to calculate. ये तो पागल हो गया ना भाई सर, क्यों सर क्या चाहिए बोल के लगेगा ना क्यों कैलकुलेट करने के बोल के. No bro, that is important है. Okay, shape of a liquid surface due to horizontal acceleration. Okay, suppose मान लो if the liquid if it is going with some acceleration, before ऐसा था ना, ऐसा liquid था, ऐसा था, but क्या होगा after certain time के बाद it is going with some acceleration, after time के बाद ये ऐसा हो जाएगा, slant हो जाएगा. Okay, in the direction of acceleration में, so you know already as in the direction of acceleration में क्या होगा, pressure decreases, right? Pressure decreases and इसमें pressure increases, right? You can think like that. Shape will be like this. Okay, now our intention is to calculate the angle. That formula याद रखना पड़ेगा. Okay, theta find करेंगे. Theta is angle. Okay, angle formula मालूम है ना? tan theta का formula आता है? Okay. A by G. A by G is answer. Good. This is answer. H है. Okay. मान लो we are considering imaginary एक cylinder है. एक small imaginary cylinder है. Okay. इसका length है L. Okay. Now our intention is to calculate the angle theta कितना है बोल के. Okay. Okay. You tell me here बाहर तो atmospheric pressure है. P naught है. इधर भी P naught है. इसको P2 मान लो. इसको P1 मान लो. You know that this is thin, very thin में P1 P2 are same. P1 is equal to P0. So that उस point में same point में I'm taking atmospheric pressure and that point में P1 P2 is same. Okay. Now tell me what is P2 is equal to in terms of rho P1 plus rho LA. P2 is equal to P1 plus rho LA. This is one. And इसका P2 and P0 का relationship क्या है? चल में P2 and P0 का क्या relationship है? P0 plus rho GH. P2 is equal to P0 plus rho GH. Okay. Now from this P2 minus P1 करो. Find this relationship and find the value of H and L का relationship लिखे हो. दोनों equations से. Tell me. From this what is and P2 के जगह में P0 के जगह में P1 डाल रहा हूँ. P2 minus P1 is equal to rho GH, right? And here from P2 minus P1 is so sir, you'll get LA is equals to rho G. LA. H by L is equal to A by G. Okay. Now divide करो. Divide करने से क्या होगा? H by L is equal to A by G. A by G. And what is H by L? Tan theta. Tan theta. So formula you have to get tan theta is equal to A by G. Very important formula. ये डायरेक्ट यूज कर लेने का. This is the angle, always it will tilt. The liquid will tilt by this angle always. आया? Yeah. चलो. Now why it will tilt like this only? Tell me. Krisha will tell. Why this will tilt always slant height only?
So because it has to balance mg cos theta, that's why it'll tilt in the slant height. It has to balance mg cos theta. The Why? mg cos theta will be acting this side, so there'll be acceleration. That's why it'll go No. like this. mg cos theta mg sin theta balance नहीं है. Anybody? प्रणव बोलो. Why the slant height only? Why not other shape में or different direction में जाएगा? And why that angle, same angle only we are taking? Tell me. Why this shape? माना बोलो. Why this shape? Sir, I don't know. So actually क्या है? G effective direction will be like this direction. Okay, we'll see this. देखो मान लो कंपैरिजन ऑफ एक्सेलरेटेड फ्लूइड विद एक्सेलरेटेड पेंडुलम. देखो मान लो वी स्टडीड न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में एक यू नो एनी क्या व्हीकल में पेंडुलम लगाया, वो व्हेन इट्स गोइंग एक्सेलरेटिंग क्या होगा, इट विल कम लाइक दिस एंड स्टॉप राइट, ऐसे होगा ना. इसका जी इफेक्टिव डायरेक्शन किस तरफ है? mg सूडो फोर्स लगाया तो ma, द रिजल्टेंट जी इफेक्टिव इज लाइक दिस. नाउ सेम वे कंपैरिजन करो इसके साथ, लिक्विड के साथ. लिक्विड में क्या होगा? when it's moving like this, acceleration pseudo force की वजह से acceleration like this, g is like this, g effective will be like this direction. That means always the liquid surface will be always perpendicular to the g effective direction. G effective direction मतलब लिखो, the free surface liquid orient in the direction perpendicular to the direction of net effective gravity. Always net effective gravity का direction only this what liquid surface will be there. This is answer. So we are comparing with the normal pendulum का किस तरफ ऐसा आ रहा है, ऐसा ही ये liquid surface also G effective direction का perpendicular में रहेगा always liquid surface. And tan theta is A by G is a formula. So do I have to draw the diagram? Yes, diagram important है, diagram draw कर लो. Very easy chapter है, कुछ नहीं, formula based है. I'll send the formula sheet also. Statics be ready and I'll keep test on this Sunday, coming Sunday में complete statics. Marks अच्छे से लेके उसमें. You Sir, saw your we have mark? No? rotating fluid also. Huh? Do we- Rotating fluid also. Yeah. So our sir is doing something of volume conservation for this accelerating. What's Yeah, that? something रहेगा तो उतना ज़्यादा नहीं आएगा, because if you see the PYQs you will understand, उतना ज़्यादा critical में नहीं आएगा. Okay, sir. एक walls का देखो, walls का उनका standard formulas will be there, वो walls का एक बार देख लो, कुछ नहीं. बट आफ्टर कंप्लीटिंग, सी अभी कंडीशन देखो, सेकंड ईयर में आपको टाइम नहीं मिलेगा टू डू द फर्स्ट ईयर. आई एम टेलिंग बिकॉज सेकंड ईयर पोर्शन इज आल्सो ह्यूज ओनली. इट्स नॉट लाइक स्मॉल थिंग. उसमें करना, एग्जाम लिखना बहुत टाइम लगता है. दे विल फिनिश नाउ, सी नाउ द पीपल विद इन नेक्स्ट मंथ, टिल नाउ नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ तक वो लोग सेकंड ईयर हो जाएगा. बाद में दे कॉलेज आर स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर का रिवीजन. दैट टाइम क्या होगा मालूम है कितना? 1 month ओनली इज देयर दैट टाइम. अभी कॉलेज का, इफ यू सी एलएन आल्सो, college ka now they are finishing almost portion of one chapter is there. That means you have January में exam होगा ना, so 2 months only will be there. That time first year भी पढ़ना पड़ेगा. रास्ते अभी चांस है, बाद में नहीं मिलेगा आपको. अभी चांस है, do all the PYQs perfectly. या एक एक क्वेश्चन का without seeing करो, या ऊपर देख कर आंसर देख लिया तो वो बेस्ट है. ओके, सो प्रॉपर करो, हो जाएगा. डन. So one second. हाँ, Sir, what does the bottom diagram represent? see this is a fluid का, this is a pendulum clock which is in Sir, if I vehicle. draw one of those two, it's enough. No, I don't want to draw the bottom हाँ one. ठीक है, बॉटम को ड्रॉ करो, हो जाएगा. लिक्विड का वेलकम, जस्ट कंपैरिजन कैसा कर रहा है बोल के.
एंड pseudo force में ऐसा क्वेश्चन की डन राइट, सेम टाइप क्वेश्चन. Until unless PYQs मुझे सबमिट करने के बाद ओनली आई विल स्टार्ट, अदरवाइज नहीं विल स्टार्ट. दैट्स व्हाई आपको कुछ आपका भी बुक में, कोई भी बुक में आप कर रहे हैं ना क्वेश्चंस में, उसमें अपलोड करूंगा विद आंसर्स के साथ. पूरा क्वेश्चन स्टैटिक्स का करो, देन ओनली आई विल स्टार्ट. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में व्हेन द नॉट डन आई विल बी टेलिंग टू डू क्लास में ओनली. ओके, चलो डन ना मनो. So last one. Yeah. G affected. Yeah, so done. So free surface orient in the direction perpendicular direction of effective gravity. Okay. Now last one is liquid in a vessel rotating with a constant angular velocity. That formula only. उसका कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं है. आपको एक लिक्विड है, इफ इज रोटेटेड लाइक दिस, क्या होगा, विच शेप रहेगा. आप केला होगा ना, बकेट में से पानी जुम 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 हाथ से केलेगा ना. So it'll be like a cylinder type. लाइक वी कॉल इज Sir, parabola. पैराबोडल. यस, वेरी गुड. पैराबोडल शेप में रहेगा, ऐसा रहेगा. ओके, नो अंडरस्टैंड करो. इनिशियल वाटर लेवल वाज ऐसा है, वाई नॉट है. वाई नॉट इज द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर, मतलब ऐसा है ना, इज द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इज वाई नॉट, ऐसा वाई नॉट. एंड क्या होगा, मैं रोटेट करूंगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा साथ रोटेट कर रहा हूँ, जुम 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 बोल कर रोटेट कर रहा हूँ. रोटेट करने से क्या होगा, ये शेप में आएगा, वाटर विल कम लाइक दिस शेप. एंड दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन से, वाई मिनिमम. And this is the maximum distance from origin, that is y maximum. Y minimum, y maximum. Okay. And this part, okay, where this part को y naught को, ये बीच का distance है, nothing but कौन सा, y naught and y minimum के बीच का distance को y max y minus y minimum by 2 बोलते हैं इसको. y max is this much, y minimum is this one. Subtract करके by 2 किया तो we'll get this length, this thickness, y max minus y minimum by 2. Okay, now इसका formulas are there, वो formula learn करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा. Okay, these are the formulas. Y is the general distance. मान लो, see इसका radius is r, the container का radius is r. अगर it is rotating from here to here, suppose this distance है, y is this distance, suppose I want this distance, x distance दूर में, x का radius है, that time क्या होगा, y का फॉर्मूला x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g प्लस y मिनिमम इज द फॉर्मूला. अगर मुझे y मैक्स एंड y मिनिमम का टर्म्स में चाहिए बोल तो y मैक्स इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g प्लस y मिनिमम. एंड y मैक्स एंड y नॉट का टर्म्स में चाहिए बोले तो y मैक्स इज y नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 4g. ये फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा इन अदर वे. ओके, बट लिखो एंड बाय ऐड करो, दिस इज इंपॉर्टेंट. y max, what is y max minus y minimum is how much formula, y max minus y minimum is how much, r square omega square by 2g is the formula. R square omega square, omega is the rotating with that angular velocity, the formula लिखो. And y max in terms of y naught, y naught is this one. And general formula y का distance चाहिए बोल तो ये वाला x, r के जगह में x आएगा, x square. So they'll always give y minimum. Y minimum they will give, y max. Sometimes they'll ask what is the difference between y minimum, y max and y minimum. So you'll bring that side and try to find r square omega square by 2g. Y naught is the initial level of the water. So what does y even represent? The height of the thingy? From bottom से any height, not at particular maximum height नहीं चाहिए मुझे, any height इधर भी हो सकते हैं, अभी शेप में इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं. I want this height only, it's some centimeters दूर में, not maximum height. That time we have to use y, normal formula. So r is range. R is not range, radius of the container. ओके, ये फॉर्मूला बैठ करना पड़ेगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g प्लस 5 मिनिमम. ओके, आ गया. Yeah, once again last. या
Yeah, so done. चलो कोई JEE मेंस क्वेश्चन Huh? आंसर टेल मी. Vessel is half filled with a liquid. When the vessel is rotated about their own axis, the liquid rises up to the five. near the wall. हाँ 5. आंसर आ गया आपको. Options I'll give. Tell me. This is to the 19. 0.1, 0.4, 1.2, So you want 2.0. it centimeters or meters? Oh, centimeters, my bad. Hmm. So 2 rotation per second is RPM or in terms of centimeters? I don't know. Check. Question is given. What are the things? What is given? 2 rotations per second, right? So JEE means So you want question. to get the answer in terms of like pi. Answer given. Options are given, right? So then I'm using calculator, sir. I need to convert pi. No need of converting. कुछ नहीं करो. So because What? first See, rotational speed you is think this is a JEE means question without calculator. You try whatever you want. First check. Then afterwards you can use calculators. You won't use calculators. करो. प्रणव रेडियंस पर सेकंड है बट ये रोटेशंस पर सेकंड आपको रेडियंस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ करो. So why you have to come? Oh God, so God. So you have to convert it into radians, or we have to convert Radians it per into omega minutes? always should be in radians per second. So how to convert, you know, right? 2 rotations means कितना angle होगा? One revolution. 720 degrees. 4 pi. Total is 4 pi. Sir, I'm question? using if I go use calculator like in 2 steps. So pi, we should take it as Sir, I'm using calculator, sir. Like. 22 by अरे 7. विदाउट कैलकुलेट करो. JEE मेंस क्वेश्चन एक बार ट्राई करो बाद में. Sir, tell you what I have to do, sir. Sir, I have to take GS 9.8 or I 10. don't want anything. Question में they given something. You have to do whatever things and answer try. I have to do 4 pi square into 0.05 square divided by 2 into 9.8. मैं क्या करूं? वो दिया तो क्या करेंगे यार. JEE मेंस क्वेश्चन एक क्वेश्चन है. करो. He is asking what, first of all, I have to understood do it, sir. what is trying to find. The difference of the height between the center and the sides. मतलब y max minus y minimum I want to find. करो. Yeah, that only is here omega square r square by 2g. करो. Yeah, wait. Approximate ले लो ना. pi 3 ले लो ना. Check करो ना if you want. Oh. So I'm getting approx 2. So, We will see. We will see. अप्रॉक्सीमेट यूज करो. पाई का सर नहीं मालूम. कैलकुलेटर क्यों होगा? 3 ले लो ना. 3.3 ले लो. अप्रॉक्सीमेट कितना होगा? अगेन कैलकुलेटर यूजिंग. sir, but if you take pi as approximately 3, Okay. I'm getting a different answer. Sir, if you use approximate 3, you'll get 1 second. Wait, I think I had a calculation mistake. Wait 1 second. Oh my god.
So I'll convert into meters and then do it to centimeters, sir. If I convert directly centimeters, I'm not getting answer. हाँ meters में convert करने का. Why? Because you are using here radians per second, right? Radians per second. Second is SI units, right? So try to convert all in 1 units. Then last में centimeters. Then 1 second. Point. 0.0025. Oh my god. So wait. So I got 8 into 9 into 0.0025 by 9.8. That looks like 2 only. 10 ले लो G का. क्या approximation calculation easy हो जाएगा. Yeah, sir. 2. I got 0.02 meters. So 2 is answer. 2 is answer. प्रणव कितना है? ओमेगा is you got right 4 पे बोल के. And R value no radius. So won't omega be 8 pi? Oh, it is 4 pi. So carbon mistake. That's understood. Why 8Q? Sir, I thought it's 4 rotations per second. So I took it as 8. नहीं आपको 2 rotations per second, right? 2 rotation बोलते कितना? 4 pi. Yes, I got my mistake. Okay, चलो. These are things. 1 minute. I will go for Pascal's law. Pascal's law मालूम है ना? Tell me, what is Pascal's law according to you? बोलो. Pascal law क्या है? So the voice is breaking. Okay, Pascal's law बोलो मानो. Sir, I don't know. As I forgot. It's a long time ago I did. Long time. Okay. Anything you know, Krisha? Pascal's law? Okay. Sir, चलो. if it goes, चल रहे. sir, if Okay, it good. goes h distance down, it'll go h distance up. है ऐसा नहीं एक्सटेंशन थोड़ा चूज नहीं है. पास्कल्स ला पापा वो डिस्कवर किया ना समथिंग. देखो देखो इन्हें फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो. इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड if an external pressure is produced any part of the fluid, then its change in pressure is transmitted undiminished to all other parts of the fluids. So क्या है? अगर आप change in pressure लगाया, आप externally some pressure लगाया, that change in pressure जो भी है, that change in pressure is transmitted undiminished with all other parts of the fluid. Okay? मतलब सपोज मान लो एक वाटर बॉल है. आई गिवन एक्सटर्नल प्रेशर. ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर दिया. आप डेल्टा पी दी के ऊपर कितना लग रहा है चेंज इन प्रेशर? डेल्टा पी आएगा. आप दैट इज अ पास्कल्स लॉ. Pascal law says whenever you apply external pressure delta P, everywhere, every point of change in pressure will be acting. Same change in pressure will be acting. That is called Pascal's law. लिख दिया. Change in pressure is same in a closed container में. कंपल्सरी क्लोज रहने का. क्लोज सरफेस में the change in pressure will be same. There is only Pascal's law. Sir, it should be the same fluid.
Copy it. No, sir, one second. So whatever the change in pressure, done. So this means No the need to change draw of that figure. No, right? points. No need of drawing figure. क्या Pranav? So this law means that the change of pressure is same for all the points inside. Yes. Every point, whatever change you applied externally, the change in pressure is same through all the parts of the fluid only, same fluid में. Okay. चलो. Now इसका application देखेंगे where we use this Pascal's law. Famous one क्या है? So can you go आपको back, sir, on the last sentence? अरे मरे क्या पढ़ रहे हैं अभी? इसका- Yeah, sir, run. Yeah, sir, done. Yes. Okay. Famous application है Pascal's law में. On the videos, Krisha. Hello. बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है. ओके. एप्लीकेशन क्या है? वन ऑफ द फेमस एप्लीकेशन क्या है आपको? लिफ्टिंग. आपको सर्विस में, आपको नॉर्मली कार सर्विस में, नहीं तो इसमें लॉरी सर्विस आल्सो, इफ यू सॉ द कार गेट लिफ्टेड इन द सर्विसिंग पॉइंट में. कार So voice is continuously breaking. लिफ्टिंग. हाँ, कार इज गेटिंग लिफ्टेड बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ ओनली. दे आर यूजिंग दैट ओनली. सो कैसा है, कैसा लिफ्ट करेगा, इतना ज्यादा फोर्स किधर से आ रहा है? आपको पास्कल्स लॉ यूज करके देखो. वन ऑफ द फेमस एग्जांपल, ए लिक्विड है. ओके, लिक्विड है. हियर आई टुक वांटेडली द स्मॉल एरिया एंड इसमें आई टुक ए लार्ज एरिया, बट लिक्विड इज सेम. वाटर आई टुक, वाटर में. ओके, मैं क्या किया, आई अप्लाइड सम फोर्स ऑन दिस एरिया, सम फोर्स ऑन दिस एरिया. ओके, लगाने से द प्रेशर will change. Initial some pressure था ना, it got delta P got changed, some pressure got changed in liquid. And I told you that according to Pascal's law, that delta P is same everywhere throughout the liquid. Throughout the liquid में the delta P is same, right? If delta P is same at these 2 points, I can tell what is the pressure का formula क्या है? Delta P of first one container is equal to delta P of the second part, right? First part, second part. You tell me first part में pressure का formula क्या है? Force upon area is equal to इसका formula force upon इसका force F2 मान लो, F2 upon area. So from this what is F2 is equal to F1 by A1 times A2, right? If you see carefully, A2 is greater than A1. We wanted to design that A2 is greater than A1. Then if A2 is greater, then F2 is greater than F1 or not? देखो ज्यादा फोर्स आ रहा है, आप थोड़ा फोर्स अप्लाई किया, आपको बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड आपको ज्यादा फोर्स आ रहा है. दैट मीन्स इट कैन, दिस फोर्स कैन लिफ्ट द कार. लॉरीज आल्सो इट कैन लिफ्ट. बहुत इजी हो जाएगा. नहीं तो कार एक क्रेन्स के साथ लिफ्ट करके नीचे साफ करने बोलते बहुत डिफिकल्ट है. बट आपको ये बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ वेयर प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्डली इन ऑल पॉइंट्स में सेम, राइट? सेम प्रेशर. सो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला F1 by A1 is equal to F2 by A2. We'll get the formula for F2 वगैरह फाइंड करो बोलेगा. We have to use this one. Understood? Copy it.
Whether from here to here energy is conserved or not, tell me. From here to here energy is conserved. Work done is same or different? Work done is same or different? Tell me. Suppose मान लो आप h1 हाइट आया, डीजे प्रेस किया, इसमें मान लो h2 हाइट ऊपर गया, work done will be always same. Work done or energy is always conserved. Conservation of energy is always valid. Energy is energy tell me what is the formula of energy? Force into displacement is equal to उसका क्या होगा? F2 into H2. This is also one of the formula where in force and H1 H2 is given, you have to use this one. Energy is always conserved. Energy is this is always valid. Energy conservation is always valid. In terms of areas में, tell me areas में क्या होगा? देखो, I can tell that area into displacement is called volume. Length nothing but volume. कितना volume of water कम आया, उतना volume of water only will rise, right? और ज्यादा ज्यादा water rise होगा, tell me. कितना वॉल्यूम नीचे प्रेस करेगा उतना वॉल्यूम ओनली विल कम अप और मोर वाटर विल बी कमिंग, टेल मी. वॉल्यूम विल बी डिफरेंट और सेम? कितना Will be the वॉल्यूम same. ऑफ सेम रहेगा? भाई बिकॉज इवन दो एरियाज बिकम बिगर बट हाइट डेप्थ इज लेस. इसमें क्या होगा? हाइट ज्यादा है, एरिया विल बी लेस, सो दोनों बैलेंस हो जाएगा. सो दिस टू फॉर्मुलास आल्सो वैलिड. दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. Volume of water you compress, the same volume of water will be coming out. The volume only. Sir, I can know we they use asked formula that even force. A2 greater than A1? Tell me, Pranav. Sir, can we use this formula even A1 is greater than A2? We are putting A2 greater than A1, right? अभी A2 is A1, ये बढ़ा दिया तो आपको क्या चाहिए? फोर्स ज्यादा चाहिए ना. Our intention is to clip the car. आपको इतना ज्यादा फोर्स इधर लगाए तो व्हाट इज द यूज ऑफ कार को लिफ्ट नहीं कर सकते ना. सो दैट्स व्हाई A2 is greater than A1 always. So these three formulas you have to learn in this one. Put in the formula sheet. Formula sheet में है. Okay, I will put. Okay. चलो हो गया complete. Yeah. चलो. Now formula F1 by A1 equal to this one easy. It will be raised that much. Okay. चलो. ये मिक्स करो. ना करो. Hydraulic car lift है. The input piston of radius is given. Negative weight. The output has radius this much. The combined weight of the car and the plunger is 2000 newtons. What is the magnitude of input force required? Calculate F1. 20,000 Newton है. Weight is nothing but force, right? F2 is given to you. F2 is given to you. What is the F1 is how much? And radius are given is circular, right? Circular ka you can use pi r square, right? Yeah. And solve and tell. Calculate करो मनो. Yeah, sir.
Sir, 50. Then I Yes, got 50 is 50. answer. Yes. So 1 50. second. Oh yeah, 50. Got it. Yes. क्या कर रहा हूँ? When the smaller piston moves through a 5 what distance the other piston will move? मतलब H2 is telling to calculate. H1 is given. So sir, over here it is A1 H1 equal to A2. Equal to H2. Yeah. Find the force also is asking, right? Force also find karo and use that one. Sir, sir, H2 will be 0.5 and F2 will be 5 into 10 to the power 4. Answer कितना है? Sir, H2 will be 0.5 and हाँ. F2 will be 5 into 10 to the power 4. Yes, Into- correct. See, Sir, 5 why into did they give F? Yeah, sir. Why did they give force? अरे find the force exerted on the larger piston. F2 शायद ना? So wait, so they gave the 2 diameters, and what's the point of giving moves through 50 centimeters? F1 by A1 equal to F2 by A2, right? समझ में आया? F1 by A1 equal to F2 by A2. Yeah. So then why would they give That's why the force is telling to find, right? वो कैसे आएगा? Force F2 कैसे आएगा? F1 is given. by A1 into A2? Yes. Yeah, sir, but we already have both the areas and force. Why did they give height? When the force of larger piston, what areas you got, right? F1 you got, right? Yeah. F2 कैसे आएगा? Tell me. So Without the diameter is 2 centimeters. देखो So the height is useless, right? कितना है मानो? No, sir. I didn't understand what the point of the when the small piston moves.